chapter है banker and customers. So as I told you, try to read out any topic, any book, any law. You should be very well aware of the terms on their meaning and definitions. तो इसी तरह इसमें बैंकर है और कस्टमर है, तो इससे रिलेटेड जो भी डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में. तो prior to discussing the rest of the other things regarding customer banker, we have a little bit know about these terms. I mean the definitions or the meaning of these words, banker and customers. Customer, you know, as the person who is account holder, the person who be deposit amount in their accounts, the person who be make a payment of the utility bill through banks, the person who make the drafts, a person who make the transactions through banks, through different checks. So all these persons are well known as a customer. इस तरह bankers हैं. Banker is a person who deals to the public in sense of lending money, investments, depositing their money on demand, paying their money, withdrawal of the different checks, make the drafts, and checking the utility bills. All these dealings, the person who's sitting in a bank is known as a banker. So इसी तरह there are some responsibilities and duties to each other. So there are some rights and obligations of a banker. उसमें number 1, the banker must honor checks drawn by the customer. When a check is presented by a customer to the banker, so it is duty of the banker to encash that check, उस check को cash करे. The banker have our second, sufficient balance. It is necessary when a customer presents a check before a banker, and then the banker will have to encash that check. But there should be sufficient balance, should be present in the account of the customer, and without a sufficient amount, that check can't be encashed. Thirdly, the banker must collect checks and drafts on behalf of the customers. अब bankers जो है checks को collect करते हैं, drafts को collect करते हैं, किसके भी यहाँ पर होंगे customer. Customers जो है cross check करवाते हैं, submit deposit करवाते हैं, इस तरह drafts बनाते हैं और वो उनको उनके behalf पर क्या करते हैं, collect करते हैं and deposit in their accounts. उसके बाद देखिए The banker is bound to act according to direction. अब banker जो है bound है जो customers को directions देगा उसको follow करना. Like अगर customer का check closed हो गया तो उसको direction दे सकता है कि उसका check closed हो गया. Any person will become into the bank regarding that check which he has lost. Same check will be not encashed by the bank. और इसी तरह अगर sufficient बैलेंस नहीं है तो तब भी वो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस उसको डिपॉजिट करवाएगा तो तब वो चेक को कैश किया जाए. तो इस तरह ही अपने अकाउंट होल्डर अपने चेक के हवाले से अपने अकाउंट के हवाले से बैंक को डायरेक्शन दे सकता है. इस तरह पे ऑर्डर बनाने के लिए कह सकता है, ठीक है ना. तो इस तरह मुख्तलिफ जो डायरेक्शंस उसको देगा या लोन के हवाले से या डिफरेंट जो भी उसकी बिजनेस डीलिंग है उसके हवाले से जो डायरेक्शन दे, the banker is bound to follow up the direction of the customer, but all that should be in legal होनी चाहिए, ठीक है ना. तो illegality नहीं होनी चाहिए. The banker must keep record of all the अब जो जितनी भी transactions हुई हैं तो it is duty of the banker to keep the record of that. So not only the record of the transaction but also all the record like their signatures, their specimen of signature, and their account opening form, all these are along with the banker as a record of the customer. The banker must not disclose a customer's account. अब banker जो है
he is not allowed to be disclose the secret of a customer transactions, और जो भी उसका secret है वो उसको, या अगर कोई account balance पूछे तो he is not allowed to be disclose the account balance to someone other unknown person of the customer. इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से अगर कस्टमर जो है कुछ ड्यूज हैं अमाउंट्स बैंकर के, तो बैंक कैन रिटेन द गुड्स एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द कस्टमर, तो उसको रख सकता है। इसी तरह डिफरेंस, अगर एक बैंकर के डिफरेंस दो अकाउंट हैं तो वो उसमें क्रेडिट डेबिट करना हो तो देन दे कैन बी जस्ट इन बोथ अकाउंट बाय द बैंकर। तो ये डिफरेंस ऑब्लिगेशंस हैं, rights and obligations of the banker towards the customer. आगे देखें protection to paying banker. The rules regarding protection as follows. Protection in order checks. अब अगर banker shall discharge from liability if he makes payment of an order checks to the paying. अब इसमें क्या है, if the person who present a check before the banker, and then it means he is bound to cash that check, because that check when he present before the banker, that is in form of order, तो वो उसको cash करना पड़ेगा। Protection in bearer checks. The person who holds the check, he is an honorary bearer, and when he present the check before the banker, and the banker is bound to make the payment to the bearer bearer of the check. Protection in drafts. इस तरह जो drafts के हवाले से है, what's happened, the customer will make the payment to the bank. The bank will make the bank draft to that person to whom they have to make the payment to the bank. तो जिसका ड्राफ्ट बना उसका नाम होगा, वो बैंक बनाएगा। नो प्रोटेक्शन इन फॉर्ज सिग्नेचर। अगर जो चेक है वो जब वो प्रेजेंट किया जाता है before the banker have to be check the signatures of the account holder with their specimen as they have the reserve in their record. If the signs are not matched, then there can be objection. But once the sign has been matched and then the check has been cashed, then the banker is not responsible for that. He is exempted from this thing. क्योंकि उसने उसको अपनी गुड फेथ सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद अगर वो किसी जगह पर कोई ऐसी बात है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन देयर इज अदर लीगल साइड्स टू बी चेक आउट। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। ही एक्ट इन गुड फेथ में काम करते हैं विदाउट नेग्लिजेंस, और विदाउट नेग्लिजेंस द चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस, जो क्रॉस चेक होते हैं दैट हैज बीन लीव इन डिफरेंट हैंड्स, तो फिर उसको डिपॉजिट किया जाता है। He received the payment on behalf of the customer only, और customer के behalf वो payment receive करता है। And there are the checks, as you know, already told you, the journal and special checks जो क्रॉस चेक होते हैं वो आते हैं और फिर वो अकाउंट होल्डर के कस्टमर के अकाउंट में जाती हैं। आगे देखें, बैंकर्स मस्ट डिसऑनर चेक। The banker is bound to dishonor the check in the following cases. Number 1, customer countermand payment. अगर कस्टमर जो है बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दे कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कि वो उसकी पेमेंट जो है चेक की वो उसको रोक दे। अब वो किन हालात में, अगर अनसफिशिएंट अमाउंट है या चेक लॉस्ट हो गया है या वो पार्टीज का लेन देन का मामला है, तो इन तमाम सूरत में कस्टमर जो है वो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है एंड दे कैन स्टॉप द पेमेंट अगेंस्ट दैट चेक। गार्डनिश ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर के जो कि बाय कोर्ट हो और जिसमें डायरेक्शन दी जाए, देन दैट अकाउंट कैन बी फ्रीज, आइदर दैट अकाउंट जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इस तरह या जो अमाउंट की जो पेमेंट है ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दे कैन बी मेड टू दैट अमाउंट टू सम अदर पर्सन। डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंस्टेंसी ऑफ अ कस्टमर। अब इसमें अगर कोई शख्स फोत हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन दैट केस दैट चेक कांट बी कैश, तो फॉर दिस दे हैव टू बी टेकन द सक्सेशन सर्टिफिकेट टू कैशमेंट ऑफ द चेक बाय द लीगल हेयर्स। नोटिस ऑफ असाइनमेंट्स।
अगर इसमें क्या है कि अगर कोई नोटिस कर दिया जाए बैंकर को कि उसकी पेमेंट को रोकना है, या जैसे आप पहले बताया कि अकाउंट्स में पैसे कम हो या चेक लॉस्ट हो, तो नोटिस जो असाइनमेंट होगा तो असाइनमेंट में बैंकर को असाइनमेंट ये कर दिया जाएगा कि भाई आप इसकी पेमेंट को रोक लेंगे। डिफेक्टिव टाइटल, अगर टाइटल में डिफेक्ट पाया गया तो इस किस्म का चेक जो है डिसऑनर हो जाएगा। उसमें क्योंकि टाइटल जो है वो ठीक होना चाहिए। लॉस ऑफ चेक लॉस्ट हो तो तब यू कैन आल्सो मेक द बैंकर वो पेमेंट को स्टॉप कर दें, पेमेंट मत करें क्योंकि उसका चेक लॉस्ट हो गया, और अगर कोई चेक कैश करवाना है तो उसको बिल्कुल इजाजत मत दीजिए। इरेगुलर चेक्स में जो है चेक का सिग्नेचर था। अब इसमें जो ऐसे चेक जिसमें सिग्नेचर जो है जो स्पेसिमेन के साथ जो उनके पास स्पेसिमेन सिग्नेचर्स हैं उसके साथ मैच नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर चेक कांट बी इनकैश्ड। क्लोज ऑफ अकाउंट्स, अगर कस्टमर बैंक को ये कह दे कि दे वांट टू बी क्लोज देयर अकाउंट, then it's on the direction on the instruction of the customer, the bank must have to be close that account, उस अकाउंट को उसको बंद करना पड़ेगा। आगे देखिए बैंकर में डिसऑनर चेक्स। द बैंकर में डिसऑनर चेक्स इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, पोस्ट डेटेड चेक्स, अगर 10 तारीख का चेक दिया उसको पहले प्रेजेंट कर दिया तो पोस्ट डेटेड चेक तो वो इन कैश नहीं होगा। अगर सफिशिएंट बैलेंस फंड आपके अकाउंट में मौजूद है और आपने किसी को चेक दे दिया है और वो उसमें इतने पैसे नहीं है तो इस किस्म का चेक जो है वो भी इन कैश नहीं होगा, डिसऑनर हो जाएगा। और थर्ड, when funds of the customers are reserved for some special purposes and the fund are not available for payment, अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए फंड का रिजर्व किया हुआ है और बाकी आपने किसी और को चेक दे दिया तो वो इस मतलब पैसे हैं लेकिन वो सम अदर पर्पस के लिए फिक्स किया हुआ है तो वो भी जो है इन कैश नहीं होगा। When check is not properly present, for example, present after banking hours. अब ये banking hours का भी ख्याल रखना है कि you have to present the check before the banker in the banking hours. You have to present after the banking time, that is not proper, so that can be dishonor as well. The check must be present before payment. अब 6 months के अंदर you have to present every check before the banker. After 6 months, if you have to be present that check will be dishonor. क्योंकि लीगली एक चेक आप 6 माह के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर बैंकर। अगर आपकी अमाउंट जो है चेक में आपने लिख दिया 50,000 और फिगर में आपने लिख दिया कुछ और तो वो भी चेक जो है इन कैश में होगा, वो भी डिसऑनर हो जाएगा। और इसी तरह अगर बैंक के अगेंस्ट लियन है और आपका फंड जो है वो पूरे नहीं होते और आपने वो चेक दे दिया है तो बैंक को तो वो भी कैश नहीं होगा। कस्टमर सिग्नेचर डज नॉट टैली स्पेसिफिक सिग्नेचर नहीं मिलते तो वो नहीं होगा। और आपने बैंक से लोन लिया और उसके अगेंस्ट आपने चेक दे दिया और चेक में आपके फंड नहीं है तो वो भी आपका चेक जो है कैश नहीं था। एनीवे इसमें क्या था कि बैंकर एंड कस्टमर and the protection of the bankers and the obligations of the banker and the directions of the customer towards the banker, इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है कि बैंकर को कस्टमर के साथ किस तरह डील करना चाहिए, किस तरह उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, किस तरह उसको सिक्योर करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है बैंकर के हवाले से डिस्कस की गई हैं। और जो कस्टमर है वो किन हालात में उसके जो चेक्स जो हैं वो डिसऑनर हो सकते हैं और किन हालात में वो बैंक को डायरेक्शन दे सकता है कि वो उस चेक को इन कैश ना होने दे। तो ये चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं।